नमस्कार और आपका स्वागत है कैनाबिस नेटवर्क में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सिकंदर सिद्धू और आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता था कि कैसे वो बच्चों को जिन्हें कैंसर था उन्हें कैनाबिस और कैनाबिस के प्रोडक्ट्स ने हेल्प करी। तो मैं आपको पहली वीडियो दिखाना चाहता था एक बच्ची जिसका नाम है डालिया, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। उसके पेरेंट्स ने मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प ली, डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया सर्जरी, तो उन्होंने सर्जरी करवाई, उन्होंने कीमोथेरेपी भी देने के लिए मंजूरी दी, लेकिन वो रेडिएशन अपनी बच्ची को नहीं देना चाहते थे बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन को सफ़र करे। बिकॉज रेडिएशन और कीमोथेरेपी ऑल्दो आपको हेल्प करते हैं बट इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन्हें अनफॉर्चुनेटली हम दवाइयों के थ्रू अभी भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। Dahlia Barnhart is a little go-getter, an active 3-year-old who's battling brain cancer, and poster child for an herbal supplement, CBD. Her mom is sold on it. Her quality of life was deeply diminished, and the CBD seems to me to almost overnight have given that back to her. Dahlia had gone through months of treatment and was still suffering. Issues with pain and brain damage, really, from the surgeries and the chemo both. तो फिर डालिया के पेरेंट्स ने कैनाबिस ट्राई किया। Mariah Barnhart tried CBD and was immediately impressed. The very first night she ever took it, she slept through the night for the first time in her entire life. तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ एक CBD ऑयल कंपनी के ओनर का। उनका क्या कहना है इस प्रोडक्ट के बारे में। It's definitely not a prescription drug. What it is, it's a simple compound that's found from a simple plant. Much like vitamin C is found from oranges, CBD is found from commercial hemp. So जैसे कि आपने सुना, कोई केमिकल्स नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, सिर्फ एक प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट है। इट्स दैट सिंपल। तो चलिए हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं एक और लड़की का जिसका नाम है मकेला, जिसे ल्यूकीमिया था। मकेला के माँ बाप भी जब उसे डॉक्टर्स के पास ले गए, डॉक्टर्स ने सभी तरह के प्रोसीजर, सभी तरह की दवाइयाँ ट्राई कर ली, लेकिन जब मकेला के पेरेंट्स ने देखा कि उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही, तो तब उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए और तब उन्होंने कैनाबिस ऑयल को ट्राई किया। तो ये है मकेला की स्टोरी। तो देखते हैं कैनाबिस ऑयल मकेला की कितनी मदद कर पाया। My name is Erin Purchase. I am the mother of brave Michaela. She's 7 years old and she has intermediate risk T-cell acute lymphoblastic leukemia. She was treated very aggressively with 4 or 5 different chemotherapy drugs. It makes you not eat very good and it makes you feel kind of pukey. Without the cannabis, I feel more tireder, and with the cannabis, I have more energy to like play and stuff. And she's unpausing it. It makes me feel funny, happy. सो ये जानते हैं कि कैनाबिस ऑयल स्पेसिफिकली उन बच्चों को जिन्हें कैंसर है उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है। We use it for nausea, for pain, to reduce anxiety, any anxiety associated with the chemotherapy in the hospitals. We use it to fight cancer itself. I feel deep down in my heart that cannabis would get her through her chemotherapy without using as many pharmaceutical medications, and I felt that it would be the proper means to treat her side effects from chemotherapy, and that's why I used it. Instantly, when she started taking the cannabis oil, we saw a very good reaction to it. It controlled her nausea, her pain, every symptom she had, and she just turned into a normal child. हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान जिसे कैंसर है उसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो कोई भी तरह की मदद अगर उसकी पेन को, नौजिया को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को मदद कर सके, हम उस एवेन्यू को क्यों नहीं एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर ये एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट इतना यूजफुल है तो अब इसे हम ले कैसे सकते हैं। अब एक छोटे बच्चे को आप ये ऑयल कैसे देंगे। Each day, Brandon injects cannabis oil into small lime-flavored capsules. Michaela takes 2 capsules a day. The alternative? Prescription anti-sickness pills and narcotics. I feel that the long-term consequences of narcotic pain relievers are a lot more damaging to Michaela than a simple organic oil that's made from
a plant named cannabis. Yeah, the benefits far outweigh the risks. लेकिन यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अब आपको ऐसे कैप्सूल लेकर उसमें ऑयल को डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तब की बात है जब ये इलीगल था और ये फेडरली अभी भी ग्रे एरिया में था। लेकिन आज ये कैनबिस के कैप्सूल्स, कैनबिस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ये प्रोडक्ट्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं। जैसे प्लेटफॉर्म्स लाइक CBD स्टोर India.com पर आप इन प्रोडक्ट्स को ईजिली ले सकते हैं और टिंक्चर्स को ईजिली मंगा सकते हैं। बट कुछ साल पहले जब ये फैसिलिटीज़, जब ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मकेला जैसे बच्चों की मदद करने के लिए उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, एक और बच्चे का जिसका नाम है केसी, जिसे 2 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। तो जब उसके माँ बाप ने उसे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने सर्जरी रेकमेंड करी। सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी रेकमेंड करी और बहुत ही हाई डोज कीमोथेरेपी का यूज़ करना पड़ा उन्हें अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कीमोथेरेपी जैसे कि हम जानते हैं अकेले नहीं आती है, ये पूरी फैमिली ऑफ इश्यूज़ को अपने साथ लेके आती है। सो मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स ने उसे आधा दर्जन दवाइयाँ दी, लेकिन ये आधा दर्जन दवाइयाँ उसकी हालत को किसी भी तरह सुधार नहीं रही थी। कीमो जहाँ उसके कैंसर को मार रही थी, वहीं कीमो केसी को भी धीरे धीरे अंदर से खत्म करती जा रही थी। Doctors cut into Kashi's brain to remove what they could, only about 10% of the tumor. The Hydes could only hope aggressive treatment could get the rest. 3 rounds of chemo followed by stem cell rescue, then 3 rounds of high-dose chemo after that. A difficult treatment plan for anyone. So imagine what it did to a 2-year-old kid. Believed and they prayed high-dose chemo was killing his cancer, but it was making Kashi sicker than ever. He was taking 120 milligrams a day of 5 different drugs to try to make him comfortable. But that, Mike said, wasn't helping ease Kashi's pain. That's going to help get the tape off. I'm going to hold this, okay? By the end of September, he had gone 40 days without eating. He was vomiting 9 to 10 times a day. He couldn't lift his head off his pillow. He was literally laying there shivering in his bed. And the doctors came in and I said, is there anything we can do for Cash? The doctors had no answers, so Mike found his own. Relief in the form of a controversial oil. तो आप इमेजिन करिए 5 पिल्स का कॉकटेल मिक्सचर, फिर भी अपने बेटे को जब कोई हेल्प नहीं मिली, तब केसी के फादर ने, तो केसी के पिताजी ने भी वही किया जो कोई भी पिता करता। उन्होंने तब सोचा कि वो कैनबिस ऑयल ट्राई करेंगे। जब केसी के पिता ने कैनबिस ऑयल ट्राई किया तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Mike got authorization to give Kashi the oil, and without telling them why, he told the doctors to wean Kashi off the nausea cocktail. Inserted through Kashi's feeding tube, a tiny amount of oil replaced all those drugs. The result, Mike says, was almost immediate. You're watching a kid that hasn't had the will to eat in 4 months, 5 months, actually take a bite of something. He hadn't eaten a thing in 40 days, and it was really incredible just to watch him take a bite of a piece of cheese, you know. It's showing that he wants to live. There you go. Kashi did his last round of high-dose chemo with no anti-nausea drugs. Mike says the doctors told him they were amazed. Mike never told them why. I wanted to tell him, hey, he's on cannabis oil, but I was afraid they would take it away from him. तो अब इमेजिन करिए अगर केसी के पिताजी ये जोखिम ना उठाते कैनबिस ऑयल यूज करने का, तो क्या हालत होती आज उस बच्चे की। वो 2 साल के बच्चे को इतने ड्रग्स और इतने कॉकटेल्स मिक्सचर्स पे डाल दिया होता कि वो जिंदा जरूर होता, बट वो शायद फील भी कुछ ना कर पाता। वो इतनी पाइप्स के साथ हुक्ड अप, अब वो बच्चा भागता फिर रहा है। But Mike Hyde doesn't care about the controversy or about the political battle over this drug. He cares that his son survived and is convinced not only did the cannabis oil make Kashi feel better, it prevented long-term damage to his organs. For Mike, the living proof is in this vibrant 2-year-old boy. Yeah, it's very controversial, it's very scary, but there's nothing more scary than about losing your child. A week after we did this interview, Kashi was back in Salt Lake for scans, finding out he's cancer-free. He's back home in Missoula, back with his family, back to teasing his big brother Colty. Kashi will spend his 3rd birthday like every kid should, with the fight of his life behind him. तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो होपफुली
आपको कन्विंस कर सके कि कैनबिस कितना इफेक्टिव है उन बच्चों के लिए जिन्हें कैंसर है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा एडवांटेज ये है कि हमने एक लड़की जिसे बचपन में बोन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, उसे हम बड़ा होते इस वीडियो में देख सकते हैं उसकी टीनेज लाइफ में। In second grade, my face started to grow and it was getting bigger. My mom decided to take me to the hospital. The news from the doctor was grim. Riley, who was 7 at the time, was diagnosed with aggressive giant cell granuloma. Only a handful of people in the world have the disease. I was just like so uncomfortable because, you know, like seeing my face in the mirror and it's like all big and it made me really sad and stuff. I was also in pain because of my seizures that I started having. My stomach would cramp up and I started to hallucinate. So जब राइली के डॉक्टर्स ने कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दी, उन्होंने बोला कि डायग्नोसिस अच्छे नहीं है। राइली की अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण उसके इवन दांतों को सूचर करके इन पोजीशन रखना पड़ा था ताकि वो गिर ना जाए। तो इतनी सिवियर कंडीशन थी राइली की। तो इतनी सिवियर कंडीशन में जब राइली की माँ अपनी बेटी को इतना सफ़र करते नहीं देख सकी, तो उन्होंने भी सोचा कि वो भी कैनबिस ट्राई करेंगी, बिकॉज उन्होंने इसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करी थी और इसके बारे में पढ़ा था और उन्हें इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ऑनलाइन नहीं दिखे। तो उन्हें लगा कि उन्हें अपनी बच्ची के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन जैसे कोई भी पेरेंट होता, वो बहुत डर रही थी और उनका ये डर हम समझ सकते हैं। तो तब देखते हैं क्या हुआ जब राइली की मदर ने डिसाइड किया कि वो राइली को कैनबिस ऑयल देंगी। After surgery, Riley's mom decided to give her medical marijuana to see if it would help her symptoms. I was so scared. Anytime you give your child any kind of new prescription, you're scared because you're looking for those side effects. We just researched a lot and came across, medical cannabis as a possible alternative that could help her heal, and I couldn't find anything that was detrimental with using that. The tumor, it shrunk. The seizures, they stopped. It's way smaller than it was before. I haven't had a reoccurrence in about 4 or 5 years. Taking cannabis oil, it made me feel so much better, and my bone was growing back. The roots of my teeth were growing back. Before they were held in with stitches and I was told they wouldn't live, but the roots regenerated and I still have my teeth. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राइली जिससे सीजर्स होते थे, जो कॉकटेल मेडिकेशन पे थी, जिससे सर्जरी करवाई, जिसके दांतों को सूचर किया गया था ताकि वो ना गिरे, जिसके ग्रिम डायग्नोसिस थे, जिसके प्रोग्नोसिस में कोई भी डॉक्टर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देता था, वो 4 से 5 सालों में उससे रिकरेंस नहीं हुआ। तो क्या हमें इससे ज़्यादा प्रूफ चाहिए कि कैनबिस हेल्पफुल है? तो अब ये देखते हैं कि इतना इफेक्टिव ड्रग जिसने 5 कॉकटेल मिक्सचर्स को रिप्लेस कर दिया इतनी भयंकर कैंसर जैसी बीमारी के लिए, तो उसे एक टीनेजर, एक छोटी सी 12-15 साल की बच्ची अगर खुद को एडमिनिस्टर करेगी 4 बार दिन में, तो उसका तो पूरा दिन लग जाता होगा। तो अब देखते हैं राइली अपनी मेडिसिन 4 बार दिन में लेती कैसे है। And just that quickly, Riley Maidler takes her medical marijuana. I take it 4 times a day, 1 in the morning and then during lunch and then during dinner and then at night before I go to bed. The 13-year-old from Delaware says cannabis oil has helped treat the tumor that was eating away at her bones. And just like that, वो पेन से इतनी सेल्फ कॉन्शियस थी, अपने फोटोग्राफ नहीं खींच पाती थी, बाहर जाना नहीं अच्छा लगता था, लेकिन आज वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी जी सकती है। अब उसके फेस पे कहीं पे रिकग्नाइजेबल भी नहीं है और इसके सिम्टम्स भी कितने ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। तो यही सब एक्सपीरियंस के थ्रू जाकर राइली ने सोचा कि ना केवल वो लोगों की मदद करेगी, बट उसने राइलीज फाउंडेशन नाम से एक संस्था को खोला है, जहाँ पे वो अपने ही जैसे बच्चों को जिन्हें कैंसर या ऐसी कंडीशंस हैं, उन्हें एजुकेट करती है, उन्हें हेल्प करती है। तो अगर आप इन संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ राइलीज फाउंडेशन के साथ जुड़िए। आप इनसे मदद लेना चाहते हैं, प्लीज़ इन्हें रीच आउट करिए। आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें डोनेट करिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाना चाहता हूँ एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है डेरल, जिसे एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो केवल 4 से 5 लोगों को पूरी दुनिया में है, 1 in a billion रेयर है ये। इसका नाम है लैंगरहिल सेल सार्कोमा और उसकी जो मदर है
जब उन्हें ये पता लगा कि उनके बेटे का कोई इस मदद नहीं कर सकती है मॉडर्न मेडिसिन, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे वो जेल भी जा सकती थी, बिकॉज यूके में उस समय जो कैनबिस के लॉज थे वो बहुत डिफरेंट थे। तो हम देखते हैं डेरिल की और उसकी मदर की स्टोरी, कैसे उसकी मदर को जेल जाने तक का खतरा उठाना पड़ा ताकि वो अपने बच्चे को सर्वाइविंग शॉट दे सके, ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा सके। So the treatment you were facing that the doctors recommended was a bone marrow transplant? Yeah, it was extensive chemo and radiotherapy, and then bone marrow transplant. And you didn't have just one transplant, this was 3 that you had to have, and how did you get on with that? Well, they failed, the first 3. But yeah, it's not too trouble. So it's not a big problem to have them. So. But then after that, as a mum, because he then really began to suffer. Yeah. You have to watch him suffer. How bad was it? Well, after the 4th transplant, they told us that the first 3 had failed, and literally all they had was one more chance for him. They had one more bag of his own cells, no more. They'd stressed the thing to us that there was no more chances after this, and unfortunately 3 days after he had his final transplant, he trapped his fingers down the side of the bed and then picked up some infections. Now obviously infections with no immune system whatsoever, and no way for an immune system to even start to build within his body. He was literally being kept alive by antibiotics. That's what they told us. He did get incredibly ill. Throughout his whole treatment he'd been very happy and smiley, and he'd always tried to be quite jovial, but actually those last couple of months were very, very difficult. He was in a lot of pain. You were given, I think, 3 days. 3 days a week at most is what they told me when I asked them the time scale. But you planned your funeral, hadn't you? Mm-hmm. Yeah. To what extent? All of it. What were you going to do? It was going to be fancy dress, and I'd chosen all the costumes for people, and it was going to be quite embarrassing for some of the people to come. So yeah. You actually said you wanted to go. Yeah, I did. He was looking forward to it. After 4 years of treatment, it's enough. Enough was enough. तो जैसा कि आपने सुना, डेरिल अपना खुद का फ्यूनरल तक प्लान कर चुका था। वो 4 से 5 साल प्रोसीजर्स को हैंडल करके इतना तंग आ चुका था कि वो एक्चुअली मरना पसंद कर रहा था। इस समय उसे लग रहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बेटर है। तो ये कंडीशन है मॉडर्न मेडिसिन की, जो दुनिया की सबसे एक्सपर्ट ओपिनियन है। ये है वो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस बच्चे को इस हद तक कंडीशन पे ले आई है कि वो अपने खुद का फ्यूनरल प्लान करता है, बिकॉज उसे इतना भरोसा है कि मॉडर्न मेडिसिन उसकी मदद नहीं कर सकती। तो जब ये हालत हो गई उस बच्चे की, तो उसकी माँ को लगा कि वो अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ जब उन्होंने अपने बेटे को ये ड्रग, जबकि वो जेल भी जा सकती थी, तो जेल का रिस्क उठाते हुए एडमिनिस्टर किया। Through lots of research, I'd done lots of research. Obviously, when his secondary cancer arrived and it was so unknown, I turned to the internet and started looking. And over the following months and couple of years afterwards, cannabis just kept popping up. People kept emailing me, "You need to try this. You need to." And I said, "But he hasn't got cancer. The cancers are gone. This is now a completely different issue. It won't work for him. There's no." And I would dismiss it. And it actually came to the point where I was in hospital with Darren, and he was so incredibly ill and really on a high dose of morphine that he was actually now on fentanyl, which they can't go any further than that. And it wasn't working against his hands and the other issues he had with his stomach. And I asked the doctor for Bedrocan, which is a cannabis-based pain relief that's available in Europe, because I didn't. I wanted to go through the proper measures, and she actually told me we can't because it hasn't been licensed for children. So, and more of it came up. People just kept saying, and I thought, do you know what? What have I got to lose? And you've got nothing to lose at that. He's dying anyway, so they just withdrawn your antibiotics. At this point, there was no other treatment. No. So you took this, and you asked him, and you said, "Yeah, let's try it." I was happy too. What did you notice? How quickly did things change? Oh my God! I mean, I honestly, the effects of it blew my mind. It wasn't what I expected. All I expected was done a little bit of research, and some people use cannabis to kind of alleviate their anxiety and some pain, and that's what Darren was really experiencing. And on day 70, when they said there's definitely nothing in his bone marrow, there's nothing there, you've now just got to wait. Darren got very anxious and said, well, how much longer do I have to wait? They started to try and up the morphine, introduce sleeping tablets, and so that's when I actually gave it. And within half an hour to an hour... How was it administered? Under the tongue, sublingually.
It's just a tincture. It's not the oil that people talk about. It's just a tincture. Then what did you notice? We noticed within half an hour to an hour that he was just chilled out. He just relaxed. The anxiety stopped. He no longer was panicking, and he was able to be compos mentis, which he wasn't able to be on the morphine. But health-wise, I mean, actually things being tested against you, your white blood cells began to go up? Yeah, after 5 days. Obviously, they told us nothing in his bone marrow. So gave it to him 5 days later, when the bandages came off his hand and we saw healthy fingers, which we were told there was no way they were under there. When we saw a healthy finger, so the doctors started panicking. This was now day 75 after the transplant. And he was meant to only be there for three days. Yeah, and nobody has ever engrafted after 50 days. So day 75, and all of a sudden his white count has appeared. The doctors start running around frantically. Doctors from Bristol Children's Hospital were called in to do some more blood tests, which I said, well, there's no point. You told me only a week ago there's nothing there. And obviously, in the blood count, it was there. It's very small, but it was there. And to test the theory, you actually withdrew the cannabis for a little while, and the blood count started to go down again. So where are you now? How are you now? Perfectly healthy. my bloods are all normal. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना रिमार्केबल चेंज है उस बच्चे की लाइफ में, और मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता था ताकि हम हमेशा याद रखें। तो ये प्रोडक्ट्स आज बहुत आसानी से अवेलेबल हैं अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, इंडिया में, ऑन वेबसाइट्स जैसे कि cbdstore.india.com, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो हमें याद रखना चाहिए उन लोगों को जिन्हें बहुत लंबा और बहुत मजबूती से लड़ना पड़ा था गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि वो ये हक पा सकें कि वो उनके बच्चे और हम लोग CBD, कैनाबिस और ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें अपनी मेडिकल कंडीशंस के लिए। तो इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल भी खोला था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैनाबिस प्लांट्स, कैनाबिस प्रोडक्ट और इसके फ़ायदे समझा सकूं। बिकॉज एक बहुत बड़ा माफिया है जो नहीं चाहता है कि ये प्रोडक्ट्स के फ़ायदे लोगों तक पहुँचें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम कोशिश करते हैं एक नया वीडियो हर हफ्ते अपलोड करने का, तो प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब बटन दबाइए या बेल आइकॉन को दबाइए। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर उस ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंच सके जो कैंसर या फिर कैंसर जैसी किसी भी बीमारी से पीड़ित है, जो कैनाबिस और कैनाबिस के प्रोडक्ट्स के अपना इलाज कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।